जी, a very warm welcome to all the viewers and participants. I haven't uttered a word. I've just started the very first line. So, very warm welcome to all of the participants. And there are primarily two purposes of this particular initiative. First one was first one is that I'm getting bored. I haven't been into classrooms since last 10 to 15 days. So I was getting bored. So I've decided to deliver something. And second, a lot of students have been asking for free sessions. So as you people know that I often don't have time for such philanthropist activities. So since these are the free days and because of Eid, I'm free till 2nd of July. So I decided to take this initiative. Now coming to specifically to the title of these lectures. So these lectures are basically that of Pakistan affairs from evolution of Islam to the creation of Pakistan. Now make sure that uh, uh, few parts of overall this syllabus is not being the part of FPSC CSS examination. But as far as your provincial commissions are concerned, so this whole area is definitely part of Pakistan affairs. In addition to that, screening tests, other one paper tests, you would definitely come across some 15 to 20 objectives from this area. And I personally believe that although my lectures, as far as this particular area from evolution of Islam till creation of Pakistan is concerned, so I know what I was saying at that time. I was telling you that in your objective papers, like 100 marks papers or other papers, wait a second. Why no sound जी? Am I audible जी? आवाज आ रही है जी मेरी? मेरी आवाज क्लियर है जी? Okay, fine.
So start करते हैं जी. I won't be looking into these comments जी. I will deliver my lecture, and at the end of the lecture, uh, I would ask you people that if you have any question, to then ask at that time. During the period of my lecture, I won't be looking into these comments because it would divert my attention and my focus. So start करते हैं जी. For me, there are three portions from evolution of Islam till creation of Pakistan. There are three portions. You can divide into three portions. First portion definitely from evolution of Islam till War of Independence. Second portion from War of Independence till 1892. And third portion, which is known as your political struggle, Muslim political struggle, from 1892 till 1947. What I do is that I usually start with the third phase because the third phase is the most interesting phase, and since your childhood you have been cramming topics like Shimla Deputation, like Nehru Report, formation of Muslim League, 14 points, Khutbah Allahabad. So there are fixed narratives which have been set in your mind. So first of all, my purpose is to shake those structures which have been created in your mind through textbooks. I'm not saying that whatever has been written in the textbooks pertaining to freedom movement is wrong, but rather there are lots and lots of missing links which the textbooks, particularly since your matriculation or intermediate, they are unable to connect events. So मैं क्या करता हूँ फिर कि मैं उन इवेंट्स को कनेक्ट करता हूँ. बेटा प्लीज बाबा की क्लास हो रही है. प्लीज क्लास हो रही है बाबा की. प्लीज. थैंक यू. थैंक यू. So इसलिए I start with थर्ड फेज 1892 का जो फेज है उससे स्टार्ट करता हूँ. Why 1892? When we study Pakistan movement, freedom movement, we usually consider the turning point is that of 1857 War of Independence, or we usually consider 1906 Shimla Deputation, or we usually consider Khutbah Allahabad or Lahore Resolution. But for KK Aziz, for other nationalist, critical nationalist historians, it is always 1892, 1892, which was the most important year and the most important turning moment in history of freedom movement is concerned. As we know that British, directly or indirectly, they were in India since 1757 when they conquered first territory in 1757 in Bengal. And slowly and gradually within the next 100 years, they would ultimately conquer whole of the India. And in the aftermath of War of Independence in 1858, they were the absolute rulers of India. We knew it. How to govern India? That was the question.
So very first act which was introduced by British in India after War of Independence was that of 1861, Act of 1861. Yet again, we say that the turning point is 1892 June. In 1892, for the first time, British administration in India started, approved, and showed their commitment towards democracy in India. For the first time, democracy at the very highest level was started in 1892. Now make sure that for in order to understand freedom movement, you must keep in your mind two things. One is the geographical map of India. Unless and until you are not clear that what was the geographical position or locality of a particular province, you cannot understand freedom movement. And secondly, British administrative model in India, how British used to rule India. As far as geography of India is concerned, at that time in 1892, there were 6 provinces in India, British India. We're not counting the princely states, rather British India. There were only 6 provinces. And in those 6 provinces, none of the province was a Muslim majority province. In Punjab, Muslim population was at that time about 50%. In Bengal, Muslim population was about 35 to 40%. Bombay, and Sindh was part of Bombay at that time, and Bombay Muslim population was merely 25%. In UP, United Provinces, UP Muslim population was 14%. In CP, Muslim population was less than 10%. In Madras, Muslim population was less than 10%. So these were the 6 provinces at that time. There was no NWFP, there was no Sindh, there was no Balochistan at that time, there was no Bihar, Orissa at that time. Those were the 6 provinces. Madras, UP, Bombay, Punjab, CP, six provinces. And maximum Muslim population in any province was 50% in Punjab. That's it. Overall in British India, Muslim population was 25% in British India. So, since democracy was launched in India by the British in 1892, and it was a food for thought for Muslim leadership. Although democracy was a great initiative on the part of British, although it is absolutely insane to even imagine to reject or condemn democracy in India. It's a very healthy step at that time. But for Muslim leadership, that particular development was problematic. Reason, because democracy demands majority. And Muslims were not in majority overall in British India, and neither in any of the province at that time. And that can amply be gauged with the fact that when a first election after 1892 Act was held in 1892, the same year, none of the Muslims managed to win even a single seat for the Imperial Legislative Council, for the Central Assembly, you could say. Not even a single one in 1892. So the Muslim leadership, the food for thought for Muslim leadership, their concerns, their apprehensions were very much right. That how can Muslims would win even a single seat
when they are not in majority in provinces as well as overall in British India. Now, this apprehension or resentment was not new. Nearly a decade ago, Sir Syed has also highlighted such a tendency. But when Sir Syed highlighted such a tendency or such a sensibility, at that time, democracy was introduced at the very grassroots level, at the local government level. But after 1892, democracy was introduced at the provincial and central level. So, in 1895, second term elections were held, and for the first time, one Muslim was managed to get success, Nawab Salimullah of Dhaka. He was the first elected representative of Muslims in India. Because he was elected from the area. Baba की class हो रही है, please. अम्मा को बुलाओ, अम्मा देती हैं आपको पेपर. Please. अम्मा को बुलाओ, अम्मा लेती मेरी क्लास हो रही है, बेबी. Please. Please, मेरी क्लास हो रही है, अम्मा को बुला लो. अम्मा दे देती हैं. Please. Thank you. हाँ, वो मैं अब क्या करूँ, मैं ले रहा हूँ. Thank you. So in 1895, Nawab Salimullah of Dhaka, first elected representative. 1898, again elections were held for the third term, and not even a single Muslim was elected. 1901, again elections, not even a single Muslim was elected. So Muslim apprehension of Muslim leadership was very much genuine. We are not referring to provincial legislators, make sure. We are referring to the central legislature. In the central legislature, under Governor General of India, consisted of two pillars, Executive Council and Imperial Legislative Council. As far as Executive Council was concerned, there was not even a single Indian at Executive Council level. All the members of the Executive Council, they were British. There were 5 members, and all 5 members were British. And as far as the Imperial Legislative Council was concerned, where the Imperial Legislative Council, there were only 40% Indians were allowed to sit in the Imperial Legislative Council. The rest of the members were British officials. And for those 40% Indians, elections were to be held across India. And the strength, overall strength of this 40% in terms of number was 6 to 8. Minimum 6, maximum 8. So for only 6 to 8 Indian members, and when we are saying Indian, so it may be Muslim, Congress, or anything. So मुस्लिम्स की तो बात ही नहीं हो रही ना, इंडियंस की बात हो रही. इंडियंस में सारी मुस्लिम्स भी हैं और बाकी सब भी. So 6 से 8 सीटें, and when elections were to be held for 6 to 8 seats across India, the chances are very less for Muslims to take majority, because Muslims were not in majority in any province. This is that particular decade of 1892 till 1901. You can easily imagine the political plight of Muslims of India and the apprehensions of the leadership, Muslim leadership. 1901 was an important year. In 1901, owing to administrative reasons, a territory was elevated to the status of province, and that was NWFP. Of course, it was administrative reason as well as
security reasons, a new province was created, and more than 80% of the population of the province was Muslim. It was a sigh of relief for Muslim leadership that okay, fine, one we have got one province. But ये अलग बात है that elections were held in NWFP in 1937 for the first time. But still, it was a booster, a psychological boost for Muslims of India. एक सूपा तो मिला ना. Since 1901, Governor General of India, Lord Curzon, were also skeptical towards the land of Bengal, the vast land of Bengal. Capital of Bengal, Calcutta, was also used to be the capital of British India at that time. So he was of the view to divide Bengal owing to administrative reasons. Under the British administrative control of Bengal, 1880s witnessed a great famine, and British were unable to address that famine, that drought. He was of the view that Bengal was such a vast territory that even the land assessment officers and the land revenue collection officers, they were unable to inspect all the territory of Bengal, particularly southern Bengal. So he was of the view that administrative reasons पे, और ये हम पढ़ते आए हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है. So Bengal was divided. आसान सी बात. 1892. Oh, sorry, 1905. 1905 again was a sigh of relief for Muslim leadership because the new province East Bengal have a population of nearly two-thirds majority of Muslims. So any electoral process in East Bengal would definitely result into Muslim victory in provincial legislature as well as for central legislature. And from here on, we will analyze freedom movement in a triangle, in a political triangle. And there are three characters of this political triangle: Congress, Muslim League, and the British. एक चीज आपको बता दूं जी, मुस्लिम लीग की स्ट्रगल है अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, अगेंस्ट द पॉलिटिकल जायंट्स ऑफ इंडिया जिनका नाम ब्रिटिश है. Freedom movement of Pakistan is not a struggle of Muslims of India against Hindus of India. ये जहन में रख लें. ये वो पहली खराबी है जो आप लोगों को छोटे होते से आप लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर डाल दिया जाता है. It's a political struggle, so respect it like a political struggle. History of freedom movement in India was not a communal struggle. Jinnah has never took any stance pertaining to rights of Muslims of India
as that somewhat Muslims are a separate religion in India. Rather, he was of the view that Muslims are a separate nation in India. मोटी बात है, जिसको समझ नहीं आती इग्नोर कर दे, जरूरी नहीं है हर चीज समझ में आए। अक्सर हमसे सवाल पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में कि जी अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था तो फिर हिंदुस्तान में तो आज भी मुसलमान ज्यादा है, पाकिस्तान में तो मुसलमान कम है, तो क्यों जी? तो हमने जो एक नैरेटिव फ्रीडम मूवमेंट का पढ़ा होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम फंस जाते हैं फिर कि हाँ यार बात तो ठीक है। तो भी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं बना था, ये ध्यान में रखें। और यहीं पे खराबी है सारी। पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद है उन मुसलमानों की जो ये समझते थे कि वो हिंदुस्तान में एक अलहदा कौम है, ये ध्यान में रखें। जो ये समझते थे कि हम एक अलहदा कौम नहीं है, हम एक ही कौम, पूरा हिंदुस्तानी एक ही, वो हिंदुस्तान में रहे, सिंपल। तो टू नेशन थ्योरी जो आपको छोटे से पढ़ाई जाती है ना, हमारा खाना पीना सोना जागना हिंदुओं से डिफरेंट है। टू नेशन थ्योरी इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, एक सियासी तस्वुर है, मजहबी तस्वुर नहीं है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे ये जो 6-7 सेशन होंगे इसमें आपके दिमाग जरा खुलेंगे, आपको अंदर वेरी सोर्स, जो खास सोर्स जहां से आप एक अच्छी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स बना सकते हैं आफ्टर माय लेक्चर्स, एंड दैट इज मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, a study of Muslim nationalism in India by के अजीज। कमाल की किताब। सो हम 1905 में थे जी, और 1905 से आगे की जो आपकी स्टडी है वो एक पॉलिटिकल ट्रायंगल जिसके 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे जी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश, और यही चलेंगे। एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव तो हमने देख लिया, अब या वो आगे भी चलेगा ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, बाय पार्ट्स इसको देखना है और फिर इनको कनेक्ट करना। फर्दर देखते हैं जी ब्रिटिश पर्सपेक्टिव को। We'll go until 1911, then we'll come back दोबारा से फिर कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में देखेंगे पूरे फेज को, एंड देन अगेन बैक एंड मुस्लिम लीग के पर्सपेक्टिव में देखेंगे which was formed in 1906। तब बात समझ आती है, सीधी सीधी बात नहीं है बाजी हिंदू मशरकी बंगाल तकसीम बंगाल के खिलाफ हो गए और साजिशें बुनने लग गए। इतना बेला कोई हिंदू नहीं बैठा हुआ था उनके मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहता। उन्होंने भी अपनी रोटी पानी करनी थी, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी मजदूरियां करनी थी, पढ़ना था, लिखना था, शादी ब्याह के रस्म रिवाज थे उनके। ये नहीं सुबह दोपहर शाम बैठे वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते जा रहे थे, और अगर करते भी जा रहे थे तो मुसलमान भी कोई कम नहीं थे, वो भी फिर करते जा रहे थे। तो वो इग्नोर दैट कम्युनल एस्पेक्ट of India, and that what I'm not saying it. It is from the statements of Jinnah that Jinnah strongly believe that political process in India was communalized not by Muslim League but by Congress. मजहब का सहारा मुस्लिम लीग ने नहीं लिया भाई, कभी नहीं लिया। मजहब का सहारा हमेशा कांग्रेस ने लिया, और मजहब का सहारा आप उस वक्त लेते हैं जब आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वीक हो जाते हैं। तो पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं वो मजहब का सहारा नहीं लेते। बिकॉज ऑफ टाइम आपको कुछ हवाले भी देंगे इंटरेस्टिंग से, मजेदार से।
few among you who are here being the part of this live video session, वो आपको कमेंट्स में बता भी सकेंगे कि मैं जो आपके साथ बातें करने जा रहा हूँ ये वही बातें जो अपनी क्लास में करता हूँ बातें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कोई नई बातें कर रहा हूँ या मैं हट के बात कर रहा हूँ या पूरी बात नहीं कर रहा, सेम बातें हो रही हैं। तो पहले ब्रिटिश पर्सपेक्टिव देख लेते हैं जी। एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव तो आपके पास आ गया, because in order to administrate effectively the area which is known as Bengal, Bengal was divided into two parts, East Bengal and West Bengal. British, immediately after this partition, witnessed resentment, criticism from the dominant elite of Bengal, because the economic life of the Bengali elite was badly, miserably hampered by this particular division. Secondly, it has been mentioned in the memoirs of Lady Lady Minto, wife of Lord Minto, the Governor General of India. She was of the view that British administration was very much apprehensive of the progress of Congress, and they wanted to reduce the influence of Congress as well in India. इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग बनाई, ये ध्यान में रखें। हम पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, 3 पर्सपेक्टिव देखेंगे और आखिर में हमारे पास सच सामने आएगा। In the same year, elections were held in Great Britain, and after many years, a Liberal Party was victorious in Great Britain. Now make sure whenever there would be Liberal Party in Great Britain, the Liberal Party would definitely provide concessions and reforms to colonies, not only in India but elsewhere as well. And whenever there would be a Conservative Party in Britain, harsh treatment can be witnessed towards colonies. So with the coming of the Liberal Party, new reform agendas for colonies, and since India was the largest colony, was on the cards, and Lord at that time Morley, the Secretary of State for India, he delivered a speech in British Parliament and highlighted the intention of the British government, newly formed British government, that we would introduce reforms in British India. Since Liberal Party was in power, so it was very much expected that more and more liberal reforms would be introduced in India. And that can amply be witnessed in 1909, that when reforms were introduced in 1909, popularly known as Minto-Morley reforms. So more and more benefits were provided to Indians, both, when I am saying Indians, all Indians, Muslims, Hindus, हमको उसमें segregation नहीं कर रहे, all India. कैसे? As we have discussed earlier, that 1892 reforms, in 1892 reform, Indians were only, their participation in the Imperial Legislative Council was only, in terms of number, was 6 to 8. And none of the Indians were allowed to become part of Executive Council. And the liberal tendency of British government can be seen in 1909, when for the first time one Indian was allowed to become member of Executive Council for the first time. The Executive Council in India was the Supreme Council of Governor General. They were not only the advisors, but as well as they were ministers. And first Indian was allowed in 1909. In the first year, 1909 till 1910, one Indian, Hindu Indian,
was the member of Executive Council, popularly known as SP Sinha, Lord Sinha, and the second one was Sar Imam Ali, a Muslim, from 1910 till 1911. So for the first time, this was a very, very good initiative, very liberal initiative on the part of British government. And second, Imperial Executive Council was enlarged. Previously, there were only 6 to 8 Indians, and under the new bill, new reform package, Indian seats were increased and increased up till 27, from 6 to 8 to 27. Now, how many seats were fixed for Muslims, how many seats were fixed for others, वो अगले पर्सपेक्टिव में बात होगी, अभी तो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. सो तब्दीली आ गई है 6 से 8, और एक लिबरल गवर्नमेंट ने आपको नई रिफॉर्म्स जो दी हैं उसमें इंडियन elected seats were 27, total seats were 60, 33 were British officials and 27 Indian elected representatives. That's good sign. But on the contrary, if we deeply look into the politics of India, despite those liberal initiatives, India was burning. Non-cooperation against British India was nearly the order of the day during that phase from 1905 onwards. And in 1911, owing to these demonstrations and protests, and unluckily, the demise of the king in 1911 and the new king, whose coronation ceremony was to be held in India, British were compelled to annul the partition of Bengal in 1911. मजबूरी हो गई थी उनकी annulment करना. बड़ी मजेदार कहानी है इसकी. 1911 में ब्रिटिश किंग अल्लाह मियां के प्यारे हो गए, फोत हो गए, और जो क्राउन प्रिंस था वो थाईलैंड के जंगलों में व्हाइट टाइगर का शिकार फरमा रहा था. और ब्रिटिश हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये किंग को दफनाने से पहले जनाब अगला किंग जरूर बनाते हैं पहले, ताकि क्योस से बचे. तो थाईलैंड में क्राउन प्रिंस है, उसको इंग्लैंड जाना है, वहां जाके उसकी कोरोनेशन होनी है, तो इट वाज डिसाइडेड कि इंडिया में कर लेते हैं जी कोरोनेशन. तो इंडिया में कोरोनेशन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बेचारा फंस गया ना. कैपिटल कौन सा है? कैलकाटा. और कैलकाटा वाज बर्निंग. वेस्ट बंगाल का भी कैपिटल है और ओवरऑल ब्रिटिश इंडिया का भी कैपिटल है, और उसमें सबसे ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो किंग ने आना है, न्यू किंग ने इंडिया आना है, तो जनाब उसको सपोर्ट चाहिए ना जी, गवर्नर जनरल को. सपोर्ट कौन दिलवाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है. सो कांग्रेस से सपोर्ट अगर सीख करनी है तो डेफिनेटली आपको कांग्रेस को कोई ना कोई प्रॉमिसेस देने हैं, करने हैं. सो पहला इनिशिएटिव तो ये लिया गया कि जनाब कोरोनेशन कैलकाटा की बजाय दिल्ली करवा दो. किंग वुड कम टू दिल्ली और दिल्ली वुड बिकम कैपिटल. सो पहला तो इनिशिएटिव ये लिया गया. तो 1911 में न्यू दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. एंड सेकंड, किंग ने जैसे ही कोरोनेशन सेरेमनी हुई तो पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर किंग ने कैपिटल का किया कि नाउ यही कैपिटल होगा जी दिल्ली, और दूसरा एग्जेक्टिव ऑर्डर किंग ने किया एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. ये तो हो गया एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव. अब हम वापस जाने लगे हैं दोबारा 1905 में, और अब देखेंगे हम फिर मुस्लिम पर्सपेक्टिव, मुस्लिम लीग का पर्सपेक्टिव. सॉरी, 1905 with the partition of Bengal, Muslim leadership was jovial कि वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, मुझे हो गई, क्या बात है. And with the coming of Liberal Party, Muslim leadership
के पास एक अगला क्वेश्चन आ गया कि ओके फाइन, बंगाल के मुस्लिम्स का तो काफी हद तक सिक्योर हो गए, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बन गया, बट व्हाट वुड हैपन टू मुस्लिम्स लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया? Should we ask for other separate provinces in rest of the provinces? That would be a very childish demand. कि यूपी में भी थोड़ा से इलाके मुसलमानों के लिए अलग सूबा बना दें, बॉम्बे में भी बना दें. That would be a very childish demand. So क्या किया जाए? लॉर्ड मॉर्ले की स्पीच भी आ गई कि हम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे. So a delegation was formulated in October 1906 एंड ये डेलीगेशन इसको लीड किया सर आगा खान ने. ये डेलीगेशन शिमला जाएगा. शिमला में गवर्नर जनरल कुछ साल, आधा साल शिमला में बैठे रहते थे. तो गर्मी बड़ी होती थी, ह्यूमिडिटी बहुत होती थी कलकत्ता में, तो आधा साल तो गवर्नर जनरल जो है वो शिमला में बैठे रहते. शिमला इज जस्ट लाइक हिल स्टेशन, जिस तरह हमारे जो हिल स्टेशन है. ये मुस्लिम डेलीगेशन जाएगा जी, और ये जाके अपनी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करेगा. आगा खान इसको लीड करेंगे. खालिद बिन सईद ने इसके डेलीगेशन के मेंबर 70 लिखे हुए हैं. के अजीज और बाकी हिस्टोरियंस ने ये 35 लिखे हुए हैं, तो ज्यादा 35 के साथ ही हम चलते हैं. और मजे की बात यह है कि इस डेलीगेशन में 35 मेंबर डेलीगेशन इंक्लूडिंग आगा खान, one way or the other, they were all either the friends of Sir Syed Ahmad Khan, either the companions of Sir Syed, either they have been the supporters of Aligarh School, College, donors of Aligarh, either they have studied in Aligarh or they served in Aligarh. 35 का 35 one way or the other सर सैयद अहमद खान के साथ जुड़ा रहा है पास्ट. तो यही तो इम्पैक्ट है सर सैयद का. अलीगढ़ से पढ़ने वाले, अलीगढ़ में पढ़ाने वाले, अलीगढ़ में सर्व करने वाले या अलीगढ़ को डोनेट करने वाले, वही गए हैं 35. तो पहुंचे आप शिमला, गवर्नर जनरल के साथ मीटिंग हुई, डिमांड्स पुट फॉरवर्ड की गई. हमें नहीं पता अभी क्या डिमांड्स हैं, अभी बात करेंगे उन पे. नो मेक श्योर बड़ी जो पॉलिसीज हैं ब्रिटिश इंडिया में, मेजर डिसीजन मेकिंग डिसीजंस, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं कर सकता था. All major decisions pertaining to policy matters pertaining to British India were to be approved by British Parliament in London. So whatever the demands Muslims put forward in Shimla deputation, Governor General was not in his capacity to approve those demands. वो इतना कर सकता था कि आपकी डिमांड्स को वो फिर अपने रिमार्क्स के साथ फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, वजीर अमूर हिंद जो कि ब्रिटिश होता था, लॉर्ड मॉर्ले, उसको भेजेगा. मॉर्ले वुड प्रेजेंट those demands in British Parliament and then British Parliament would approve those demands. Major decisions, major policy matters वो गवर्नर जनरल के हाथ में बंधे होते थे. So Lord Minto was the Governor General of that time, and he not only gave advice to Muslims, but as well as also he was in favor of those demands, but वो approve तो नहीं कर सकता. So his advice was that how would the British Parliament react when they would listen to these suggestions, these demands. He was of the view that all those demands, since they are political demands, so there must be a political party, and through that platform of that political party, इन demands को जाना चाहिए. ऐसा नहीं था कि ये जो मुस्लिम लीडरशिप थी ये बेवकूफ थी, पागल थी. They took a letter with them to Governor General, जिसको more than 1 lakh, कुछ जगह पे लिखा है 1,14,000, कुछ जगह लिखा है 1,04,000, तो more than 1 lakh people they signed that petition, जो साथ लेके गए ये कि देखें जी ये मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की डिमांड है जी, क्योंकि अभी पार्टी नहीं बनी हुई थी.
सो गवर्नर जनरल वाज ऑफ द व्यू के पहले वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, उस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से डिमांड्स की जाए। सो हम देखते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर शिमला डेपुटेशन में जो आपने डिमांड्स की वो अप्रूव नहीं हुई, बट हम उसको सक्सेस ही लिखते हैं बिकॉज गवर्नर जनरल ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन वो उसको अप्रूव भी नहीं कर सकता बिकॉज ये डिमांड जाएंगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहां पे ब्रिटिश मिनिस्टर इनको पुट फॉरवर्ड करेगा, इन पे डिबेट करवाएगा एंड देन अप्रूव होगी। सो 1906, same year, within the lapse of next 2 months, All India Muslim League was formed. In December 1906, the very first aims and objectives, very first aims and objective of All India Muslim League was to promote sense of loyalty among Muslims towards British. सो क्रिटिक इसको फिर देखो, देखो जी ये मुस्लिम लीग तो बनी ही अंग्रेजों की वफादारियों के लिए थी, ऐसी बात नहीं है। Heavy hand of British fell more upon Muslims of India after War of Independence, सबको पता है। British were skeptical towards the loyalty of Muslims of India. So एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि फोस्टर करेगा, प्रमोट करेगा सेंस ऑफ लॉयल्टी अमंग मुस्लिम्स टुवर्ड्स ब्रिटिश, दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। माइनॉरिटी आंखें नहीं दिखा सकती जी, जो माइनॉरिटी आंखें दिखा के प्रेशराइज करके अपनी डिमांड्स मनवाने की कोशिश करती है, उसकी डिमांड्स नहीं मंजूर होती कभी भी। यह पॉलिटिकल प्रोसेस की एक बिटर रियलिटी है। माइनॉरिटी को हमेशा सॉफ्ट अप्रोच के साथ ही चलना पड़ता है फॉर इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम पॉलिटिकल राइट्स। अगर कोई भी पॉलिटिकल माइनॉरिटी एग्रेशन शो करेगी तो उसको एक डिसरप्टिव फोर्स लिया जाएगा, उसकी डिमांड्स को अप्रूव नहीं किया जाएगा। ये एक रियलिटी है। सो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। आगा खान सबसे बड़ा नाम था जी, आगा खान वुड बिकम द प्रेसिडेंट। बट द पॉइंट इज दैट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन इंडिया कैन नॉट डिफेंड दोज प्रपोजल्स जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए, अभी करेंगे। देयर मस्ट बी अ लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग, बिकॉज लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग ही तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इफेक्टिवली एड्रेस करेगी। So within the lapse of next 6 months in 1907, All India Muslim League London branch was established. And the president of the London branch was Sayyid Amir Ali. Bala aadmi tha. Had there been no Sayyid Amir Ali, your story would have been totally different. He was a judge of High Court in India, and later, going to His Excellence, he became member of the Privy Council of the Crown, based in London, Supreme Council, Supreme Judicial Council, Privy Council of the Crown. He was member of that Privy Council. और जो सेकंड मैरिज है सैयद अमीर अली की, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन के। कुछ सोर्सेज में लिखा है उसकी बेटी के साथ, कुछ में लिखा है उसकी भांजी के साथ, भतीजी के साथ। तो दामाद था जी अंग्रेजों का, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था। सो व्हेन सैयद अमीर अली would advocate the demands of Shimla deputation, तो एक ऑर्डिनरी मिनिस्टर, ब्रिटिश मिनिस्टर के लिए it would be difficult to neglect the voice of Sayyid Amir Ali. He was such a powerful voice. So since British liberal government थी and यहाँ से फिर लंदन मुस्लिम लीग की ब्रांच, collective efforts, and in the next 2 years in 1909 when Minto Morley reforms were introduced, not only more seats were witnessed, but as well as more political rights for Muslims of India can also be witnessed. For instance, there is not even a single seat fixed for Muslims in 1892.
all the 6 to 8 seats were general seats for all Indians. कोई भी जीत सकता है. तो मुस्लिम तो एक दफा ही एक जीता बस, नवाब सलीमुल्लाह of Dhaka in 1895. So for the first time in 1909, owing to this collective effort, out of 27 seats which were increased in 1909, 6 seats were fixed for Muslims of India. कि 6 सीटों पे तो मुस्लिम्स ही आएंगे असेंबली में. सो तब्दीली आ गई. It was a great success at that time. But after 1909, within the next 2 years, when partition of Bengal was annulled in 1911, so that was a shock for Muslim leadership. नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ने सियासत छोड़ दी. आगा खान ने एक प्रोटेस्ट में सियासत से इलादा कर लिया अपने आप को. भाई हम इतना लॉयल चल रहे थे ब्रिटिश के साथ 1905 से ऑनवर्ड्स. पॉलिटिकल प्रोसेस में हम एंगेज थे. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स को हम अब स्ट्रेंथन कर रहे थे और हमें आउट ऑफ नोवेयर ब्रिटिश ने अकेला छोड़ दिया. विदाउट टेकिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इनटू कॉन्फिडेंस, बंगाल एनलमेंट कर दी जनाब. सूबा छीन लिया हमारे से. एक ही तो सूबा था. जो बड़े डीमोटिवेटेड हो गई थी मुस्लिम लीडरशिप 1911 में. सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अब नया 1911 के बाद होगा. कोई मोटिवेशनल एलिमेंट और नया मुस्लिम लीग की सफों में दाखिल होगा. हमें नहीं पता, तो तुम बाद में जाएंगे भैया. तीसरे फेज में हम जाने लगे जी. एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव देखा, एक मुस्लिम लीग का पर्सपेक्टिव देखा, एंड अब जा रहे हैं हम फिर कांग्रेस के पर्सपेक्टिव. बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कांग्रेस का पर्सपेक्टिव, it is pertinent to highlight those demands which were mentioned in Shimla deputation. Now make sure, since it's a very much a legal struggle, so the points, the clauses which have been written, वो एक लीगल टर्म्स में उनको लिखा गया. लीगैलिटी बहुत ज्यादा है, एंड एवरेज स्टूडेंट्स और एवरेज रीडर जिसका लॉ का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके लिए वो टेक्निकल अंग्रेजी हो जाती है काफी. So you don't have to cram that अंग्रेजी, that English. Rather, you must write in your own words. Appreciate करता है एग्जामिनर. So 6 बड़ी डिमांड्स हैं जी शिमला डेपुटेशन की, और कमाल की डिमांड. बारी बारी देखते हैं जी उनको. आसान से जरा मुश्किल की तरफ जाते हैं. पहली डिमांड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. अब शिमला जा रहे हो, सियासी मकासद के लिए जा रहे हो, लेकिन मांग आप यूनिवर्सिटी रहे हो जाके. और वो डेफिनेटली कौन सी यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ एमए कॉलेज, उसको एलिवेट किया जाए टू द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी. क्यों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी? आज तो आपके लिए बंदर बांट है ना डिग्रियों की. सेमेस्टर सिस्टम, टीचर के साथ बैठ के चाय पी लो, उसके 1-2 काम कर दो, मुस्कुरा के टीचर के साथ बात कर लो तो नंबर लग जाते हैं. डिग्रियों की बंदर बांट लगी हुई है. बेड़ा गर्क ही हो गया पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम का इस सेमेस्टर सिस्टम ने. दुनिया में कामयाब गया सेमेस्टर सिस्टम, आपके यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम डिग्रियों की बंदर बांट लग गई बस. नॉलेज की प्रोटेक्शन एंड नॉलेज की प्रोडक्शन के लिए बनती है यूनिवर्सिटी. प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज. हमारे मुल्क में डिग्रियों की बंदर बांट है यूनिवर्सिटी का मकसद. इसलिए जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, पीएचडी कर लिए हुए हैं डिसिप्लिन्स में, लेकिन एक पीएचडी भी 1.5 से 2 घंटे का सेशन डिलीवर नहीं कर सकता. और अगर कर भी देगा तो वो अपने सब्जेक्ट में जिसमें उसने थीसिस किया हुआ है, वो स्पेसिफिक जो उसकी डोमेन है उसमें बात कर सकेगा. वो अपने खुद के सब्जेक्ट की ओवरऑल एक
कंप्रिहेंसिव एंड ऑल इनकम्पासिंग कॉन्टेक्स्ट में कनेक्टिविटीज के साथ जोड़ के लेक्चर नहीं दे सकेगा। क्योंकि बड़ी आइसोलेटेड होके कंपार्टमेंटलाइज होके स्टडी शुरू हो गई हुई है। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो खत्म हो गई। तो यूनिवर्सिटी का काम है प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज। And 19th century witnessed two major attacks of that of Hindu-Urdu controversy in 1867 and then in the year 1900. And Muslims of India at that time they were of the view कि हमारी यूनिवर्सिटी होगी जनाब, हम अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट प्रमोट करेंगे एज अ नेशन, मेक श्योर। Urdu was not the language of a religion in India. Urdu was the language of a nation in India. रिलीजन को साइड पे करना है। रिलीजन की बुनियाद पर जब आप पूरी फ्रीडम मूवमेंट को स्टडी करते हैं तब आप फंस जाते हैं, नैरो हो जाता है दिमाग, बड़ा लिमिटेड हो जाता है। नेशन की बुनियादों पे स्टडी करना है तो दिमाग खुलता है। लो जी, एक तो ये। अच्छा, साग यूनिवर्सिटी का एक और भी बड़ा मजेदार एस्पेक्ट था कि ये जितने इलेक्शन थे ये पूरे के पूरे इंडिया में तो होते ही नहीं कि जनाब जितने भी अडल्ट हैं वो सब वोट कास्ट करेंगे इंडिया में, ऐसा तो नहीं था। इलेक्टोरल प्रोसेस वाज नॉमिनेशनल इलेक्शन का प्रोसेस था, नॉमिनेशनल इलेक्शन where certain unions, trade unions, bar councils, as well as university syndicates were entitled to conduct election. और उन यूनियंस और उन काउंसिल्स में से जो जीतेगा वो मेंबर बनेगा। तो ये ऑल इंडिया लेवल के इलेक्शन नहीं होते थे, ब्रिटिश नॉमिनेट करते थे डिफरेंट यूनियंस को, डिफरेंट काउंसिल्स को कि उनमें इलेक्शन हो। और उनमें एक यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स भी थी, 3 यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में। चौथी यूनिवर्सिटी फिर बनारस यूनिवर्सिटी बनी। तो 4 यूनिवर्सिटीज में इसकी सिंडिकेट्स में के मेंबर्स इकट्ठे होंगे, ये इलेक्शन कंडक्ट करेंगे, जो जीतेगा वो मेंबर बन जाएगा। तो हमारी एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, उसके सिंडिकेट के मेंबर्स भी मुस्लिम्स होंगे, तो सिंडिकेट्स के इलेक्शन में फिर मुस्लिम एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, उसके भी जीतने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। तो इसलिए मांगी यूनिवर्सिटी और प्लस सिंडिकेट। अच्छा इनिशिएटिव था। सेकंड, गजेटेड एंड नॉन गजेटेड जॉब्स फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। गजेटेड जॉब्स आपकी यही जो आज समझते हैं आप, पेपर में तो नहीं लिखना आपने, लेकिन आज जो समझने की बात है, ये जो आपकी 17 ग्रेड और उससे ऊपर की जो जॉब्स हैं वो गजेटेड जॉब्स होगी। नॉन गजेटेड में आपके ये 16, 14, 11 ये वाले जो ग्रेड्स हैं नॉन गजेटेड में आ गए। और क्लास 4 में आपका निचला जो तबका होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, दर्जा 4 तक के मुलाजिम। तो गजेटेड एंड नॉन गजेटेड जॉब फॉर मुस्लिम्स। क्यों? फ्रांसिस रॉबिन्सन की किताब है सेपरेटिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स, सेपरेटिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम्स, फ्रांसिस रॉबिन्सन, बला की किताब। और उस बुक में वो एक हवाला देता है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग देता है, अगर मुझे अभी नजर आ जाए तो आपको। काफी पुरानी हो गई ये किताब मेरे पास, अगर इसमें नजर आ रही है मुझे। शुरू में ही है कहीं पे, और बड़ी मजेदार चीज है। किताब ये काफी पुरानी हो गई मेरे पास, जिसकी वजह से
एक अखबार की कटिंग जो है वो थी इसमें, और बड़ी कमाल की कटिंग थी। ओनली फॉर, दोनों किधर गया इसमें, हाँ शायद यहाँ पे इन तस्वीरों में। नहीं पता नहीं किधर गया। आ, हम्म, नहीं अब नजर नहीं आ रहा, बड़ी मजेदार कटिंग थी। अच्छा 182, मैं 192 देखता जा रहा हूँ। नहीं नहीं, चलें कल के, मैं इसको देखूंगा दोबारा निकाल के, कल वाले सेशन में आपको वो क्लिपिंग दिखाऊंगा, बड़ी मजेदार क्लिप था अखबार का। और क्लिप क्या था, दैट मुस्लिम्स के लिए स्पेसिफिकली जॉब्स फॉर मोहम्मडन्स के नाम से, फॉर मोहम्मडन्स, चौकीदार, माली, कलमदान, कासिद, नायब कासिद, ये जॉब्स थी मुस्लिम्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। एंड द लीडरशिप इन शिमला वाज ऑफ द व्यू कि अनलेस एंड अनटिल शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मुस्लिम्स की बेहतर नहीं होगी। और ये रियलिटी है। योर वर्थ इन द सोसाइटी is not linked with the amount of money you are earning. It is rather linked with the share, your share in administration. Socio-economic condition आपकी share in administration की वजह से uplift होती है. So Muslim leadership at that time was of the view that Muslim को gazetted and non-gazetted jobs में कोटा सिस्टम उनके लिए इंट्रोड्यूस किया जाए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। तो एक एजुकेशन का, एक जॉब्स का, देन मुस्लिम जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम जजेस। नाउ मेक श्योर कि हिंदुस्तान में कोई सुप्रीम कोर्ट तो थी नहीं,
हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई कोर्ट थी तो वो सूबे की हाई कोर्ट ही होती थी, सूबे की हाई कोर्ट से ऊपर कोई फोरम नहीं। So Muslim leadership in Shimla was of the view that Muslim judges अपॉइंट होने चाहिए, Muslim judges would listen to Muslim cases according to Muslim law. So resentment against British rule वो जरा लो डाउन हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम जजेस नहीं थे, खुद सैयद अमीर अली वाज अ मुस्लिम जज in 1902. Sayyid Amir Ali, sorry, and then Sir Imam Ali was also a Muslim judge, but there was no separate quota for Muslim judges. So अगर मुस्लिम जजेस के लिए सेपरेट कोटा हो जाएगा हर हाई कोर्ट में, तो मुस्लिम केसेस मुस्लिम जजेस सुनेंगे और मुस्लिम लॉ के मुताबिक फैसला करेंगे। जब मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ के मुताबिक डिसीजंस नहीं मिलते तो फिर रिजेंटमेंट ब्रिटिश के खिलाफ नेचुरल है आती है। So not only judiciary as a straight pillar उसमें मुस्लिम्स की एंट्रेंस हो जाएगी, but as well as जो वो लॉयल्टी है टुवर्ड्स ब्रिटिश वो भी केप्ट इंटैक्ट रहेगी और प्रमोट होगी। बड़ा अच्छा जबरदस्त डेवलपमेंट थी। देन आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमने बात अभी ऑलरेडी पास में की। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन वाज मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया in 1906 demanded Muslim representation in executive council because executive council was the supreme council of India. तो उसमें मुस्लिम्स आएंगे, अगर उसके मेंबर बनेंगे तो हमारे पॉलिटिकल राइट्स इफेक्टिवली प्रोटेक्ट होंगे। वेरी गुड, यानी एग्जीक्यूटिव एज अ पिलर उसमें भी हम एंट्री करेंगे। गुड। देन फोर्थ पॉइंट, मिनिमम गारंटी on the part of British to ensure political rights of Muslims in India. अंग्रेज सरकार हमें मिनिमम गारंटी दे कि वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करेंगे। अब वैसे ये बड़ा हवाओं में पॉइंट लगता है कि ये क्या बात हुई, कम से कम गारंटी, क्या गारंटी कम से कम, यही तो ब्यूटी है। In the coming years, whenever there would be any political development against the interest of Muslim League or against the interest of Muslims of India, वो आप टाइम एंड अगेन, रफीक अफजल की बुक है हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 till 1947, टाइम एंड अगेन फिर आगे मुस्लिम लीग ने इसी क्लॉज का सहारा लिया। किसी भी ब्रिटिश पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अगर रिजेक्ट करना है तो सड़कों पे नहीं आए, प्रोटेस्ट नहीं किए, बल्कि उसको लीगली काउंटर किया। As we have highlighted in 1906 that the British would provide minimum guarantee for the protection of Muslim political rights in India, and this particular development is the violation of that clause. So लगती छोटी सी क्लॉज है, लेकिन इस क्लॉज ने आगे आने वाली तमाम पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन होनी है ऑन द पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग उनको लीगल कुशन प्रोवाइड कर। बहुत बहुत जीनियस माइंड की ये पैदावार है ये क्लॉज, और ये थे ही सारे जीनियस जो शिमला गए। 4 पॉइंट्स, लेकिन जो असल काम है वो तो भी नहीं आया। असल इशू तो था आपकी पार्टिसिपेशन का, रिप्रेजेंटेशन का। इलेक्शंस हो रहे हैं, आप जीत नहीं रहे, क्या करना है, असल तो चीज वो है। लेकिन ये साथ ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये भी बड़ा प्यारा पूरा पैकेज है, एजुकेशन का भी, जॉब्स का भी, जुडिशरी एज अ पिलर भी, एग्जीक्यूटिव एज अ पिलर भी। 5th पॉइंट, representation in access to population. Imperial Legislative Council, elected body, उसमें मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होगी in access to their population. हमें ये चाहिए। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी जी? 25%. So whatever may be formation of Imperial Legislative Council in the next future coming reforms or bill or act, जो भी फॉर्मेशन होगी,
उसमें मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन इन द इंपीरियल सेलेक्टिव काउंसिल मस्ट बी मोर देन 25%। यानी अगर 10 सीटें हैं इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, तो 3 सीटें कम से कम मोर देन पॉपुलेशन होगी ना, 25% ज्यादा होगी कम से कम। बड़ी स्मार्ट डेवलपमेंट है। और इसकी टून चेक करें आप, जो पॉलिटिकल टून है इस फ्रेज की, अगर आप इसी फ्रेज की जगह ये बात करें कि मुस्लिम्स विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन 25% इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये हार्श टून हो जाती है। बात तो एक ही, आप 25% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांगना चाह रहे हैं, लेकिन वर्डिंग की सिलेक्शन भी बड़ी स्मार्ट है। जब आप कहेंगे मुस्लिम्स वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन 25%, तो मतलब हार्श। तो माइनॉरिटी कभी भी आंखें नहीं दिखाती, हमने पहले बात की। क्लियर? तो टून भी बड़ी मजेदार है। रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस टू पॉपुलेशन, एक रिक्वेस्टिंग टून है। let us assume for a moment that British would accept your demand. Okay, fine, हम आपको 25% से ज्यादा सीट्स दे देंगे, पर जीतोगे तो असेंबली में बैठोगे ना, और जीत तो आप रहे नहीं थे। 1906 आ चुका है, आपका अभी तक सिर्फ एक मेंबर सेंटर की असेंबली के लिए इलेक्ट हुआ, और वो भी 1895 में, और आप मांग रहे हैं 25% से ज्यादा सीटें। जितनी भी असेंबली होगी उसकी 25% से ज्यादा सीटें हमारी, तो जीतोगे कैसे? जीतोगे तो असेंबली में जाके बैठोगे ना। तो फिर जो आखिरी पॉइंट है, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ शिमला डेपुटेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज criteria of separate electorates. Criteria of separate electorates, जुदागाना इंतखाबात। फाउंडेशन है जी आपकी फ्रीडम मूवमेंट की सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी फ्रीडम मूवमेंट खड़ी है। Had there been no separate electorates, there would have been no strong foundation of Muslim politics in India. अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स अनफॉर्चुनेटली जो हमें पढ़ा दिया जाता है वो सिर्फ इतना है दैट मुस्लिम्स वुड वोट फॉर मुस्लिम्स, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, और जो मुसलमान ही जीतेगा वो असेंबली का मेंबर बन जाएगा। अल्लाह खैर, ऐसा नहीं है। It is only one aspect of separate electorates. 3 aspects हैं separate electorates के। There are 3 aspects of separate electorates. खालिद बिन सईद अपनी किताब पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज में बड़ी डिटेल में इसको बताता है। इस वक्त आप लोग इस क्लास में को 52 लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं, मेरे पास 53 अब आ गए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन 53 में से 13 या 15 आर गर्ल्स